हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीएस वर्ल्ड। तो कल हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। चॉल्स की डिकम्पोजिशन तक डिकम्पोजिशंस पढ़ रहे थे हम लोग। और आज स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं कुछ आगे टॉपिक्स। लेकिन कल जो हम लोगों ने 3 बुक्स डाउनलोड की हैं, उनको थोड़ा पहले देखेंगे एक बार कि टॉपिक्स क्या क्या हैं उसमें, और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक्स वगैरह से। यहाँ से नहीं, जो मैंने बुक्स डाउनलोड करके रखी हैं वहाँ पे चलते हैं। तो ये फोल्डर है और ये मेरा लाइव सेशन। ठीक है, तो कल मैंने हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग, ये तो मैंने पहले डाउनलोड की थी। ठीक है, इसको एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ पहले। न्यू फोल्डर। ये वाली बुक थी, ये बुक थी, थिंक इज दैट थी। और इसको भी रख देता हूँ अंदर ही, देखता हूँ क्या क्या है। ये क्या है? इंट्रोडक्शन। ये MIT ओपन कोर्स वाले से लिया था, शायद डाउनलोड किया था। साउंड आ रही है? हम्म। ठीक है, साउंड वगैरह सब कुछ सही है। चलो, इसमें क्या क्या है? डेरिवेटिव्स है इसमें, चेन रूल, जैकोबियन मैट्रिक्स फंक्शन, फाइनाइट। जिसमें में कुछ दिक्कत है। डेरिवेटिव chronic products, finite difference approximations, derivatives in general vector spaces. ODE भी है, ordinary differential equation, calculus of variation, derivatives, second derivatives, eigen problem. चलो, डेरिवेटिव्स वाली बुक्स हो गई है, इसको भी इसी में डाल देता हूँ। हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग, ये वाली बुक तो देखा था, बट फिर भी एक बार देख लिया जाए। इंडेक्सेस देखूंगा, बाकी तो जो कवर कर रहा हूँ पहले उसको कवर करूंगा। उस बुक को ख़त्म कर लिया जाए पहले। व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाई यूज मशीन लर्निंग, टाइप ऑफ मशीन लर्निंग सिस्टम्स, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, बैच एंड ऑनलाइन लर्निंग, ओवरफिटिंग द ट्रेनिंग डेटा, एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स, वर्किंग विद रियल। Frame the problem, get the data, discover the data again, sorry, prepare the data for the learning, data cleaning, handling text and categorical attributes, site and train model, fine tune your model.
क्या है? क्लासिफिकेशन MNIS ट्रेनिंग मानी क्लासिफाई measuring accuracy confusion matrix precision and recall training model linear regression gradient descent polynomial regression learning curves support vector machine SVM decision tree ensemble learning and random forest हाँ सुपरवाइज्ड ये है अनसुपरवाइज्ड ये है यहाँ पे था ना सपोर्ट में SVM है ये डिसीजन ट्री इसके बाद ये है डिसीजन ट्री रैंडम फॉरेस्ट केरास सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड डायमेंशनलिटी रिडक्शन ये अनसुपरवाइज्ड k मीन्स लिमिट ऑफ k मीन हायरार्किकल क्लस्टरिंग ये है और PCA केरास केरास ये है HTTP केरास इसकी अच्छा कल ही थी मिला था ये केरास टाटा ये ये तो कल मिल गया था biological to artificial neurons biological neurons logical computation with neurons the perceptron the multi-layer perceptron regression MLPs install TensorFlow बैक प्रोपगेशन यहाँ पे था ना बैक प्रोपगेशन कुछ ये है बैक प्रोपगेशन TensorFlow PyTorch चिकोरी चिकोरी अरे यार फिर से यहाँ पहुँच गया हम्म,
यहाँ पे थे, ये था। फिर उसके बाद इसमें और क्या क्या है? CNN, RNN, LSTM, टेंसर फ्लो ही चल रहा है अभी ना, टेंसर फ्लो। ये है RNN, CNN, ये है CNN आर्किटेक्चर, NLP with RNN and attentions। फिर क्या है? रिप्रेजेंटेशन लर्निंग, जनरेटिव लर्निंग, reinforcement learning, training and development, deploying TensorFlow models and skills। अच्छा, ठीक है, तो ये हो गई। और कौन सी थी? हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग, ये वाली देख लिया। ये तो रोड मैप है, कल ने डाउनलोड, मतलब पहले डाउनलोड किया था ना। यहाँ पर डालो रोड मैप। कल ये कर रहा था ना, डिटर्मिनेंट ट्रेसेस। चॉल्स की डिकम्पोजिशन कल हो गया है। थोड़ा सा देखता हूँ उसमें, और उसमें क्या अंतर है जो मैं कल पढ़ा हूँ। राइट हैंड साइड यर्स। ये भी डिकम्पोजिशन चल रहा है, चॉल्स की डिकम्पोजिशन, मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन, और क्या क्या है? SVD नहीं, ये वो नहीं है, रुक जाओ। ओरिजिनल इमेज, दिस।
रियल मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर, नॉन जीरो, फाइलोजेनी। ठीक है, तो सॉरी, इस बुक में मैट्रिक डिकम्पोजिशन, फिर चार्ल्स की डिकम्पोजिशन, अच्छा आगे क्या और टॉपिक्स थे? वेक्टर कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन ऑफ univariate functions, partial differentiation gradients of vector valued functions, probability distribution है, continuous optimization है, general machine learning problems when models merge data, linear regression, dimensionality reduction with principal component analysis, density estimation with Gaussian mixtures models, support vector machine। चलो ये हो गई मैथमेटिक्स के लिए थिंक स्टार्ट्स। इसके कंटेंट क्या है? Statistical thinking for programmers to first babies arrive late, statistical approach, means and average variance distribution, representing histogram, plotting histogram, and PMFs, other visualization, relative risk, conditional probability report, results, class theory, cognitive distribution function, the class size paradox, normal distribution, homotopy plot, randomization, Monty Hall, Bayes theorem, stakes, binomial operations and distribution skewness, random variables. Estimation है, correlations। चलो इन सबको देखेंगे बारी बारी से, बट उसके पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन देखता हूँ स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर मशीन लर्निंग, ये भी तो अपने पास है। कंटेंट Gaussian summary, two cultures for the living foundation, simple data visualization, random numbers, critical values, hypothesis testing, covariance, significance test, effect size, statistical power। ठीक है, ये है। फिर मास्टर्स मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ये है। इसके कंटेंट क्या है? चलो कंटेंट बाद में देखते रहेंगे, लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अपना जो कंटेंट है वो फैक्टराइजेशन हम लोग कल कर रहे थे, और यहाँ पे आ जाओ VS कोड में। चार्ल्स की डिकम्पोजिशन लास्ट था हमारा कल का टॉपिक, और इन सब फाइल को पहले बंद कर देते हैं जो फालतू के लिए हुई हैं, और फोल्डर बना लेते हैं डे 20, नहीं 30।
eigen decomposition आज हम लोग पढ़ेंगे बिना किसी डिस्टरबेंस के, चुपचाप शांति से इधर। eigen decomposition .py py है, जो भी होगा इसमें होगा। चलो बढ़िया, स्टार्ट करा जाए। डे 30 eigen decomposition क्या है? Matrix decompositions are useful tools for reducing matrix to their constituent parts in order to simplify a range of more complex operations. Perhaps the most used type of matrix decomposition is the eigen decomposition that decomposes a matrix into eigenvalues. Used type of matrix decomposition is the eigen decomposition. Eigen decomposition that decomposes matrix into eigenvectors and eigenvalues. Eigenvectors and eigenvalues. This decomposition also plays a role in methods used in machine learning, such as in the principal component analysis. This also plays a role in methods. थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा साइड कर लो। Plays a role in the method used in machine learning, such as a principal component analysis method और PCA। कहाँ यूज हो रहा है? PCA में। और in this tutorial you will discover the eigen decomposition, eigenvectors and eigenvalues in linear algebra. In topics को discover करेंगे। After completing this tutorial you will know so what is eigen decomposition and the role of eigenvector and eigenvalues, how to calculate an eigen decomposition in Python, how to calculate eigen decomposition in Python with NumPy, how to confirm a vector is an eigenvector and how to reconstruct a matrix from eigenvectors and eigenvalues. Let's get tutorial। हमारे पास 5 parts में eigen decomposition of matrix, eigenvectors and eigenvalues, calculate eigen decomposition, confirm eigenvectors and eigenvalues, reconstruct matrix। ठीक है, eigen decomposition of matrix यहाँ से start है। Eigen decomposition of matrix is a type of decomposition that involves decomposing a square matrix into a set of eigenvectors and eigenvalues. Eigenvector of matrix if it satisfies all the following equation.
Eigen decomposition of a matrix is a type of decomposition that involves decomposing a square matrix into a set of eigenvectors and eigenvalues. One of the most widely used kind of matrix decomposition is called eigen decomposition, in which we decompose a matrix into a set of eigenvectors and eigenvalues. A vector is an eigenvector of a matrix if it is satisfies the following equation: vector A dot v lambda dot v eigenvector of a matrix if it is satisfies the following equation: A dot v is equals to lambda dot v. This is called the eigen equations. ये हमारी क्या है? eigen equation है. Eigen equation A dot v lambda dot v, where A is the parent square matrix that are decomposing. A है हमारा parent square matrix. Parent square matrix और V हमारा है that are decomposing. V is the eigenvector. V हमारा eigenvector है. And the lambda है lower case lambda and represent the eigenvalue scalar. Lambda eigenvalue scalar. Eigenvalue scalar. Without the dot notation हमारा ये दिखेगा ऐसा. The matrix could have one eigenvector and eigenvalues. The matrix could have one eigenvector and eigenvalues for each dimensions of the parent matrix. Not all square matrices can be decomposed into eigenvector and eigenvalues, and some can only be decomposed in a way that requires complex numbers. 1 मिनट में आया. Not all square matrices can be decomposed into eigenvectors and eigenvalues, and some can only be decomposed in a way that requires complex number. The parent matrix can be shown to be a product of eigenvector and eigenvalues.
तो द पैरेट मैट्रिक्स कैन बी शोन टू बी प्रोडक्ट ऑफ, यानी ए को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं can be shown to be the product of, can be shown to the product of the eigen vectors and eigenvalues. Which is A is equals to Q dot पावर टू विद डॉट नोटेशन, ये हमारा हो जाएगा A is equals to Q, अरे ये A is equals to Q, अब इसको क्या बोलेंगे, लैम्डा, लोअर केस लैम्डा, अपर केस लैम्डा। अच्छा, ये हमारा क्या है, ये सिंबल है अपर केस लैम्डा। कौन सिंबल, ये अपर केस लैम्डा है, अपर केस ग्रीक लेटर लैम्डा। चलो भैया, अपर केस ग्रीक लेटर लैम्डा, ठीक है। And the diagonal matrix comprised to the eigenvalues and this to the power t, यानी कि ये is a transpose of matrix comprised of eigenvectors। Q is a matrix comprised of the eigenvector, और ये उसका transpose है। However, we often want to decompose matrix into their eigenvalues and eigenvectors, doing so can help us to analyze। एक मिनट, ठीक है, सब कुछ सही है। अभिजीत, हाय अभिजीत, ठीक है। Doing so can help us analyze certain properties of the matrix, much as decomposition of integer into a prime factor can help us understand the behavior of that integer. Eigen is not a name. The method is not a, that is, what are the use cases of AI for understanding the concept of trading, and also what projects we can build in the space of trading। थैंक यू, पहले ही बोल दिया भाई ने। कहाँ गया, क्या बोल रहा भाई ने? भाई कह रहे हैं व्हाट आर द यूज केसेस ऑफ एआई फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रेडिंग एंड आल्सो व्हाट प्रोजेक्ट्स वी कैन बिल्ड इन द स्पेस ऑफ ट्रेडिंग। थैंक यू। देखो, अब ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में हमारे पास जो, अगर मतलब एआई के यूज केसेस की बात करोगे तो एआई ट्रेडिंग ट्यूटर की तरह हो सकता है, जैसे कि चैट बॉक्स वगैरह बना सकते हो, है ना, कैंडलस्टिक पैटर्न्स जिसमें आज वो दिखा सके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, है ना, जो फॉर्म होते हैं, है ना। तो एआई के यूज केसेस हो सकते हैं वो, आरएसआई, एमएसएटीपी, वेब, है ना, ये सारी चीज़ें। चार्ट का एक्सप्लेनेशन, इस तरह से मैंने एक वेबसाइट वगैरह भी देखी थी जिसमें एआई के थ्रू एक वेबसाइट बनी हुई है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एक तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं बोलोगे, उसमें चार्ट के एनालिसिस वगैरह करके या कंपनी के एनालिसिस वगैरह करके निकालते हैं। अभी मैं, मतलब वेबसाइट का नाम तो मुझे याद नहीं है, बीच में मैं ट्रेडिंग वगैरह कर रहा था तो मैंने देखी थी उसमें वेबसाइट्स वगैरह। तो
यूज केसेस तो हैं इसके, जैसे कि आप चार्ट को अपलोड कर दिया और आपने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे निफ्टी का या किसी भी चार्ट को ले लो आप, तो क्या बोलते हैं ट्रेंड्स निकाल के दे दे, RSI ओवर बॉट ओवर सोल्ड ये सब निकाल के दे दे, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मार्केट का एनालिसिस वगैरह है। बाकी तो यूज केसेस तो बहुत हैं। और रही बात प्रोजेक्ट्स की, तो प्रोजेक्ट्स तो हम बना ही रहे हैं, मतलब धीरे धीरे बनाएंगे ही। बाप रे, इतनी गर्मी क्यों लग रही है भाई। ठीक है, तो वापस से आते हैं यहाँ पे। कह रहा है एगन इज द नॉट द नेम, द मैटर इज नॉट द नेम फॉर एगन। एगन प्रोनाउंस्ड ईगैन is a German word that means own or innate, as in belonging to the parent matrix. Our decomposition operations does not result in decomposition of the matrix. Instead, it breaks it down into parts to make certain operations on the matrix easier to perform. Like other matrix decomposition methods, eigen decomposition is used as an element to simplify the calculation of the other more complex matrix operation. Almost all vectors change directions. Your content on AI. वेलकम भाई, और थैंक यू आपको भी। Almost all vectors change direction when they are multiplied by a certain almost all vectors change direction when they are multiplied by a certain by a certain exceptional vectors x are in the same direction as ax. Those are the eigenvectors. Multiply an eigenvector by a and the vector ax is the number lambda times original x. The eigenvalues lambda tells whether the special vector x is stretched or shrunk or reversed or left unchanged when it is multiplied by a. अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है। Almost all vectors change direction when they are multiplied by a. ठीक, certain exceptional vectors x are in the same direction as ax. Those are eigenvectors. Multiply an eigenvector by a and the vector ax is the number lambda times the original x. ठीक है, the eigenvalue lambda tells whether the special vector x is stretched or shrunk. Stretch होगा या shrunk होगा, और reversed or left unchanged when it multiplied by a. Eigen decomposition can also be used to calculate principal component of matrix. In the principal component analysis method PCA, that can be used to reduce the dimensionality of data in machine learning. Eigen decomposition can also be used to calculate the principal component of matrix in the principal component analysis method or PCA, that can be used to reduce dimensionality of data in machine learning. Eigenvectors and eigenvalues. Eigenvectors are vectors
which means that their length or matrix is equal to 1.0. Krishna. Eigenvectors and are unit vectors, which means that their length or magnitude is equal to 1.0. अच्छा, इन्हीं को बोलते हैं eigenvectors are unit vectors. वाह. Vectors which means that their length is length or magnitude is equal to 0, 1.0. They are often referred as right vectors, which simply means a column vector, as opposed to a row vector or left vector, or row vector or left vector. A right vector is a vector, as we understand them. Eigenvalues are coefficients applied to eigenvectors that gives the vector their length or magnitude. For example, a negative eigenvalues may reverse the direction of the eigenvectors. मतलब जो स्ट्रेच हो रहा है वो निगेटिव स्ट्रेच होगा, मतलब रिवर्स होगा. A matrix that has only positive eigenvalues is referred as a positive definite matrix, whereas if the eigenvalues are all negative, it is referred to as a negative definite matrix. Decomposing a matrix in terms of its eigenvalues and its eigenvectors gives valuable insight into the properties of matrix. Certain matrix calculation, like computing the power of the matrix, become much easier when we use the eigen decomposition of the matrix. Calculation of eigen decomposition. कैलकुलेशन कैसे होगी इसकी? EIG का यूज करेंगे फंक्शन का, और eigen decomposition calculated on a square matrix, calculated on square matrix using the efficient iterative algorithm of which we will not go into details. Often the eigenvalues is found first, then an eigenvector is found to solve the equation as a set of coefficients. The eigen decomposition can be calculated in the numpy using this 3x3 square matrix है. Matrix returning the eigen, क्या रिटर्न करेगा? Returning the eigenvalue and eigenvectors. चलो आ जाओ यहाँ पे. ये टुंग टुंग बोलता रहता है, इस साउंड हटानी मुझको. अब ये ईगन वैल्यू निकाल के देगा, ये ईगन वेक्टर निकाल के देगा. EIGA से प्रिंट करने के बाद ये ईगन वेक्टर हो जाएगा A, इसमें से ये वैल्यूज वेक्टर्स की वैल्यू आएगी प्रिंट. फिर हम करेंगे प्रिंट ये करेंगे, फिर प्रिंट ये कर देंगे. यही हो रहा होगा, यही हो रहा है. ठीक है, तो प्रिंट कर दो पहले हम, प्रिंट करते हैं वैल्यूज को.
तो ये हमें इगन वैल्यूज देगा। ऑपरेट करेंगे जब हम वेक्टर्स को तो हमें इगन वेक्टर देगा, है ना। ठीक। ठीक है, तो ये आ रहा है, ये आया इगन वेक्टर वैल्यूज, ये वैल्यूज आ गई और ये इगन वेक्टर है ये। और in the example, first print the defined matrix followed by the eigenvalues and the eigenvectors. More specifically, the eigenvectors are the right hand side eigenvector and are normalized the unit length. Okay. Confirm an eigenvector and eigenvalues. We can confirm that a vector is indeed a eigenvector of a matrix. We do this by multiplying the candidate eigenvector by the value vector and comparing the result with eigenvalue. First we will define a matrix, then calculate the eigenvalues and eigenvectors. We will then test whether the first vector and the values are in fact eigenvalues and eigenvectors of the matrix. We know they are, but it is good exercise. ठीक है, चेक करना है, चलो चेक कर लेते हैं. The eigenvectors and returns the matrix with the same dimension as the parent matrix. Parent matrix मतलब ये. Where each column is an eigenvector. The first eigenvector is vector. Eigenvalues are returned as a list where values in the return array are paired with vectors. The first, ठीक है, चलो यहाँ जाओ. वेक्टर्स ये हो गया. फर्स्ट इगन वेक्टर को कंफर्म करो. कल से और पहले मतलब लाइव आऊंगा, करीब 10 बजे लाइव आ जाया करूंगा जब तक छुट्टी वगैरह है. वेक्टर्स दिस वेक्टर 0 प्रिंट हमें करना है, सी प्रिंट कर लिया. थ्री एट 13 minus me. The example multiplies the original matrix with the first eigenvalue vector and compare it to the first eigenvector multiplied with the first eigenvalue. Running the example prints the result of these two multiplication that show the same resulting vectors as we would expect. ठीक है, चलो ये रिकंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स करना है इसी को. तो क्या करेंगे, साथ में आई डॉट एन वी करेंगे. डॉट यहाँ पे है डॉट फंक्शन का यूज और यहाँ पे डायगोनल फंक्शन का यूज. We can reverse the process and reconstruct the original matrix given only the eigenvectors and eigenvalues. First, the list of eigenvectors must be taken together as a matrix where each vector becomes a row. The eigenvalues need to be arranged into a diagonal matrix. eigenvectors को हम लोग क्या करेंगे, diagonal matrix. The numpy diag function can be used for this. Next, we need to calculate the inverse of eigenvector matrix, which we can achieve with the I and b numpy function. Finally, these elements need to be multiplied together with the dot function. ठीक है, जैसा कि इसके पहले अभी तक करते आए हैं. बस कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें और इंक्लूड करनी पड़ेगी.
from numpy import diag अरे हमारे पास है ही है, aig भी है, from numpy dot linear algebra import inv अरे है, प्रिंट करना है ये हमारे पास है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, q इज इक्वल टू वेक्टर्स, यहाँ पे again फर्स्ट b डॉट, हटा दे इसको, diagonal matrix from eigen values। अब यहाँ पे कर ले रहे हैं हम लोग क्रिएट, क्या क्रिएट कर रहे हैं, that is equals to diag values diagonal reconstruct b is equals to q dot l dot r, r कहाँ है हमारा, r i n भी किया था कि नहीं किया, रिवर्स नहीं किया, q के बाद रिवर्स भी करना था, इनवर्स, सॉरी रिवर्स बोल रहा हूँ, create inverse of eigen values eigen vectors matrix r is equals to inv, q का इन्वर्स किया, फिर डायगोनल निकाला, फिर डॉट कर दिया इन तीनों को, q को r से, फिर l से 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम चीज मिल रही है, ठीक है। चलो इसको किया जाएगा। This section lists some ideas for extending the tutorial that you may wish to explore. This some ideas for develop an eigen decomposition and reconstruction for your own small countrywide array data. Contrived list 10 high-level operations that make use of eigen decomposition. Implement the eigen decomposition operation from scratch. अच्छा भैया, define as list of list if you of these extension I would love to know। अच्छा, to cross to और बनाया जाए क्या इसको, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी नेक्स्ट क्लास में हम इसको डेवलप करेंगे, ये वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, द eigen decomposition operation from scratch for matrices defined as list of list, मतलब कि आज शाम की क्लास में ये करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं शाम को वापस से